हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं सीटीई के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली सीटीई क्या होता है। सीटीई एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, जो कि क्या होता है, एक टेम्पररी रिजल्ट सेट होता है। ठीक है, जिस रिजल्ट सेट को हम अपने सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं। सेकंड वे में हम इसको कह सकते हैं, इट इज लाइक अ नेम्ड क्वेरी। मीन्स एक ये नेम्ड क्वेरी है जो कि हमें बार बार यूज करनी है, बट हम क्या करते हैं, उस क्वेरी को एक नेम दे देते हैं और अपने सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट में उसको बार बार यूज कर लेते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स में हम सिंपली लिखते हैं विद कीवर्ड। उसके बाद जो भी हमारा सीटीई मीन्स, हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, सीटीई रिजल्ट सेट आई हैव गिवन हियर। ठीक है, देन उसके बाद लिखते हैं हम इज, एंड देन हम ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसके अंदर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, क्वेरी के लिए जो भी आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड योर टेबल नेम, ठीक है, etc. like this, and then you can select from CTE, means which name you have given here. Okay, so it is a syntax of CTE. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। with CTE is, मैं यहाँ पर अपना स्टूडेंट्स टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, it will select the students from my students table. Then I will just simply say select star from CTE. Let's execute it. So here you can see we have 41 records in my students table. Let's suppose I just want to fetch the results only which students have the city Chicago. Let's execute it. So you can see here we have 3 records only. So first you can write your query inside this CTE. Okay, and then you can use the CTE in this same SQL statement. So you don't need to write this query again and again. Okay, you can use like multiple CTEs in a single query. Like if you want to know how much स्टूडेंट्स आर फ्रॉम शिकागो, मीन्स आपके कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि शिकागो सिटी से हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद जैसे कि आपने ऊपर ये सीटीई का स्टेटमेंट लिखा है, इसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। बस आपको यहाँ पर विद कीवर्ड दोबारा से नहीं देना होगा। ठीक है, लेट सपोज आई हैव जस्ट गिवन CTE2 is, and you can use here your next query. Like if I want to use, let's suppose I just want to retrieve the count from my students table where the city is Chicago. Okay, so let's execute it. Here you can see the 3. So let's concat this result with this select. Just use CTE2. Let's join this. Okay, so it has only a student count. I have just given the student count. Okay, so let's execute it. So here you can see the column student count. So now we are fetching the result from CTE1 and CTE2. So here what we did, हमने just एक select statement लिखा inside this CTE. Okay, for this one you
can just write with keyword and then CTE. ठीक है, CTE मीन्स कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जो कि आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड नेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझको एक और CTE यूज करना है, तब मैं यहाँ पर सिंपली कॉमा लगा करके दूसरा CTE यूज कर सकता हूँ। नाउ वी हैव सेलेक्टेड द रिजल्ट्स फ्रॉम दीज बोथ CTEs. Okay, you can just select top one, top two, like this. Okay, so now whenever you need these records, you don't need to write these queries again and again. You can just use CTE. Means we have a temporary result in this CTE and CTE2. Okay, you can use update and delete also. Let's suppose where student ID 3, let's update the record. Okay, just update. So for the student ID, here you can see the first name is Michael. Update CTE. Okay, and set first name is equal to, let's suppose I have just given Michael, and I have this concatenated test here where student ID is equal to 3. Okay, let's execute it. One row is affected. Okay, now let's select from the students. So here you can see the first name is Michael Test. So you can perform the all operations, select, insert, update, and delete using these CTEs. Okay, so I have used just the CTE because in this CTE we have retrieved these records which students are from Chicago. Okay, you can use nested CTEs. Okay, so we will cover the nested CTEs in our upcoming videos. Okay? यदि आप चाहते हैं कि हमें किसी टॉपिक पर कोई वीडियो कवर करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आप हमारे किस टॉपिक पर चाहते हैं। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।